रहेगा कि एक जिंदगी जो है वो एक खूबसूरत जर्नी है। जो नोशंस होते हैं, अपने चीजें होती है, इनसिक्योरिटीज होती है, उस पर मात करने के लिए अपनों के सहारे से और एक ऐसी लड़की के सहारे से मैं ये जर्नी कैसे तय करती हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी औरत अगर ये देखा जाए तो मदर इन लॉ जो होती है, जो एक माँ होती है जो आगे जाके सास बनने वाली है, उसे उसके मन में ये इनसिक्योरिटी रहती है और वो इनसिक्योरिटी को डील करने के लिए उसका बेटा और उसके लाइफ की जो भी कोई औरत है, बेटे की लाइफ की, दोनों कैसे डील करते हैं और ये औरत किस तरह खुशी खुशी ये सारी चीजें एक्सेप्ट करती भी है या नहीं। और ये जर्नी आपको देखने मिलेगी और किस तरह दिखाएंगे वो तो खैर हमारे क्रिएटिव जो है शो के वो डिसाइड करते हैं। एंड एज एन एक्टर ईश्वरी जो सुप्रिया प्ले कर रही है, सुप्रिया हमेशा मेरा यही प्रयास रहा है कि बिल्कुल मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालकर हर बार एक अलग तरीके से इमोशन को मोनोटोनस ना होते हुए कैसे पेश करूं, ये हमेशा से मेरा प्रयास रहा है। और मुझे हर सीन जो भी मिलता है उसके पहले मैं बहुत नर्वस होती हूँ और बहुत नर्वसनेस के साथ मैं उस सीन को डील करती हूँ और कभी मेरा सीन मॉनिटर पे वापस जाकर देखती नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। तो सुप्रिया को ये सीखने के लिए मिलेगा और शायद इसका सुप्रिया का ये प्रयास आपको पसंद आए। थैंक यू। हाँ ममता जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है या दिलीप जी, दोनों से। हमने दोनों सीरियल्स देखे, अच्छे लगे। ये क्या वजह है कि इनमें इनके पिताजी नहीं है लड़के के, देव के, और दूसरे सीरियल में मामा मम्मी मेन है, उनमें माताजी पिताजी नहीं है? क्या वजह है ऐसा दोनों सीरियल्स में? मैंने पहले सोच लिया था। नहीं, पता नहीं, इसका कोई ऐसा कोई कॉन्शियस सा वो नहीं है, बट क्रिएटिवली स्पीकिंग शो की मैं अपने शो की बात करूंगा। क्रिएटिव रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि लव स्टोरी में जो सुमो और सुमन का कैरेक्टर है वो उभर कर आने के लिए ऐसे एक वैक्यूम होने की जरूरत थी उसके लाइफ में, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही कमजोर हो और उसके बावजूद वो जिंदगी के दो ऐसे पहलू, एक घर में सबको खुश रखना, उनको बनाकर रखना, और दूसरी तरफ अपने अंदर की उन आरजुओं को, उन एम्बिशंस को एज ए सुमो अचीव कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, ऑन द टोस्ट टास्क लगता है अगर सपोर्ट सिस्टम ना हो। एंड आई थिंक इट वाज अ क्रिएटिव रिक्वायरमेंट। ये कोई कॉन्शियस ऐसा कोई चॉइस नहीं है, इतना मैं जरूर कह सकता हूं आपको। पेरेंट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, सबके पास होना चाहिए। जिंदगी में कमी एक ऐसी चीज होती है ना, जहां कोई कमी होती है वहीं से एक नई कहानी बनती है हमेशा, और वहीं से हमें हमारा पोटेंशियल पता चलता है। ईश्वरी को अपना पोटेंशियल, एक साधारण माँ, एक साधारण औरत, एक असाधारण काम कैसे कर सकती है, और वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी जिंदगी में वो कमी आई थी। तो इट वॉज अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक फ्लो of the story rather than a conscious decision. And because she lost her husband, she, a very ordinary woman, did something so extraordinary. So that is what I would say. Hi. Hello, sir. Hello. My question is for Mr. N.P. Singh. Recently, MSM underwent an entire restructuring exercise and rebranding. Can you tell me how does it affect the Sony's plans in the way forward? As far as the rebranding or the change of name is concerned, as I had said earlier, that was to bring about alignment with our parent and also derive synergies from our parenthood. Sony, as you know, is a very, very strong legacy brand,
And we are part of Sony, we were part of Sony, so we decided that we should call ourselves Sony for easy identification with that brand. Sony has always stood for quality, and that's the quality you've seen right through our journey of 20 years in everything that we have done, whether it's on Sony Entertainment Television or Max or Sub, or on the way we present IPL or Mix, and I can go on and on. That's been the unifier of all our channels across the network. And that's what you will see going forward as well. I have a question for Danish as well. Danish, 2 romantic shows back to back, so to say. Are you trying to connect with the youth of today? Yes. I think that's exactly the answer. But the key driver for Sony throughout its existence has been youth as well as families. We always have been a family channel. We have been extremely popular in urban India, and we are known for certain kind of storytelling. These 2 shows, more than being romantic shows, are Sony shows in its DNA, in its execution, in its writing. And if one has to ask me what are these shows and why are they different, I primarily think these are writers' show. These are show where there is a story, and we believe we'll end the show when the story ends. We believe very strong characters with strong graph, and these are two stories we want to tell more than a strategy, and that's how I assume a lot of people will consume it as a love story, but there are many people who will consume it as family drama. Are these 2 finite as well? Yeah, the stories are finite. हाय मेरा सवाल है रितेश से प्राइम टाइम में 2 शो लॉन्च किए हैं आपने तो अकॉर्डिंग टू यू इन 2 शोज की ऐसी क्या खास बात है जो व्यूअर्स को ये शो देखने पे मजबूर करेगी? कभी कभी एक वर्ड है, शब्द है, बहुत मिसयूज हुआ है कि शो अलग है, लेकिन ये अलग को डिफाइन करना बहुत जरूरी है टेलीविजन के स्पेस में. जैसे एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर मैं देख रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि टेलीविजन जिस तरीके से बाकी चैनल्स को जिस तरीके के शोज बना रहे हैं और सोनी जिस तरीके के शोज बनाता है, उनका डीएनए अपने आप में अलग होता है. कभी कभी वो कहानियां ऑडियंस से रेजोनेट होती हैं, कभी कभी नहीं होती. हम कोशिश कर रहे हैं कि सोनी के डीएनए की अपनी कहानी ले आए जो अपने आप में वैसे ही अलग होती हैं क्योंकि वो सोनी की होती हैं. तो मुझे लगता है कि कहानियां कहने का तरीका जो होगा वो अलग होगा. वी आर ट्राइंग टू टेल द स्टोरीज वेरी डिफरेंटली, सो विच ऑब्वियसली मीन द वे वी आर राइटिंग देम, द वे वी आर माउंटिंग देम, द वे वी आर ट्रीटिंग देम, द वे द कैरेक्टर्स आर. एंड I can just go on telling you about how these shows are different from others. But essentially, because if we follow core DNA of Sony, they will always be different from anything that is happening on TV. So these are Sony shows. Hello. I'd like to add something here. I don't know about other channels, but typically if you look at these 2 shows and you wanted to know why people will, should watch, or we expect people to watch, and hopefully with some episode the word of mouth will spread and people will watch, is that if you look at this show, these are, unlike a lot of shows that we see, these are definite character graph for both male and female to start with. We have strong male characters, strong female character. We have strong love story, and we have got families which are pretty real, and the treatment is extremely real and relatable. So what you won't see in this show is that it's not going to be an amplified drama, scene after scene. The story will move, as Mamta said, organically with the character graph. And what I'm extremely, one differentiator we are extremely proud of, you will say strong male characters also, which in GEC per se, it's while it's consumed
to a great extent by women, but we believe that like any home, the male and female character and the story between them will excite the viewer, and this will be the differential of the show. Hello. So, Hi. Mr. Singh, over here. Yeah. Yeah. Uh, Hello. I would like to congratulate you as well and appreciate your endeavor to just come up every time you just come up with the shows which bring love, affection, and solidarity in the society. Thank you. There's a new kind of trend these days. Few people they just there's a new kind of trend of patriotism. There are few people who just come up holding national flag and they just try to become the judge. They just start painting. One incident took place in Delhi, Patiala House. The lawyers they just took national flag and they just beat few journalists as well. They were just trying to just showcase that this is the patriotism. So, are you just going to bring up some sort of programs or serials on these topics, like to bring up the right way or right kind of patriotism? You know, patriotism is a word which is very loosely used by all and sundry. देश के लिए प्रेम आपके दिल में होना चाहिए, उसके लिए झंडा उठा के दिखाने की जरूरत नहीं होती है. हम लोग सभी जमीन में पैदा हुए हैं और यहीं पले बड़े हैं और इस मिट्टी में ही इवेंचुअली जाना है हमको. तो देश प्रेम और उसकी जो कहानियां हैं वो मेरे लिए पर्सनली हमेशा से ही बहुत इंस्पायरिंग रही हैं. एंड आई हैव ऑलवेज व्हेनेवर आई हैव सीन मूवीज ऑन पेट्रियटिज्म, I've seen all Bhagat Singh, and I've seen Shaheed, God knows how many times, and I've seen Upkar, etc. Those movies, क्योंकि उसमें देशभक्ति का जज्बा है, वो इंस्पायर करता है आपको अपने देश के लिए कुछ करने के लिए. और जब भी मुझे मौका लगेगा, whenever I see a right opportunity and a right story, we will bring a show based on that spirit of deshbhakti on our channel. Hi, Danish, this question is for you. This is Roshni from Best Media Info. I have two questions. First is, I think these are finite episode series. Is it? Yeah, finite doesn't mean 26 episode. Okay. 400 can be finite also. Because Yeah, but I'll tell you what I mean by finite is that it has a beginning, it has a middle, it has an end. It's a story. Like any other story that we have heard when we were growing up, the story ends, these stories will also end, and there won't be any selfish reason to stretch it beyond the storyline. But I'm not telling by any standard that it's a 26 episode series. We are not doing season. This is a proper soap. Both the shows are proper soap. We have written the broad story. When it comes onto screenplay, we'll figure it out in terms of how many episodes it will be. But it definitely is not 26 episode series, but it's a finite story. We know the end. okay, and my other question is that most of the shows that Sony has brought have very strong characters, independent characters, love stories, which are not. But unfortunately, despite gaining a lot of popularity, the characters are not really able to pull off the show beyond a point. So, are these two shows promising to stick to the storyline that they are going to start with? Because that somewhere lacks in most of the shows, not just Sony, all other GECs. That is one. And